Hedging Approach of Working Capital Management, Module 147, Financial Management. In the previous module, we have talked about working capital management's approaches, and we discussed that there are three major approaches of working capital management, namely the hedging approach, the conservative approach, and the aggressive approach. And in that module, we also talked about the requirement of or the nature of requirement of working capital. And we said that some portion, some part of our working capital is always needed in the business. There is no time where we do not require it. But in contrast to this, we also have some portion of working capital which is not always needed, which is a seasonal requirement, which is a temporary requirement. And on the other side, we have got the financing options with us. And these financing options are long-term and short-term. Now, the important thing is that if we go for short-term or long-term financing, how would it affect our business's profitability or the cost of the business? The answer is very simple. Long-term financing is more costly, यानी rate of interest या rate of return long-term financing के ऊपर जो business को pay करना है वो ज़्यादा होता है as compared to short-term financing. यानी अगर एक business long-term financing का proportion बढ़ा दे, उसको ज़्यादा कर दे, तो overall cost of financing के अंदर इजाफा हो जाएगा. Now, in this background, let's have a look at this hedging approach. We said that hedging approach is one which matches the requirement of working capital with the type of financing. So, we said that short-term financing is generated for temporary requirement of working capital. यानी वो seasonal requirement जो कभी होती है और कभी नहीं होती, तो जितने अरसे के लिए वो working capital हमें दरकार होता है, उतने अरसे के लिए हम short term financing arrange कर लेते हैं, और जब वो requirement ख़त्म हो जाती है, तो हम उस short term financing को pay off कर देते हैं. And that portion of working capital which is always needed, which is the permanent requirement of the business, we go for long term financing. यानी क्योंकि ये हमें पूरा साल चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल, तो ऐसी फाइनेंसिंग उसके लिए जनरेट की जाती है जो पूरा साल हमारे पास अवेलेबल हो. Now we'll have a look at a graph. That graph will explain that how working capital approach of hedging actually fulfills the requirements of working capital with similar kind of financing. If we have a look at this graph, we see that on the vertical axis or on the y-axis we have got the dollar or the rupee value, that is the amount of working capital that is needed, and on the x-axis we have got time. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पैदा हो रही है. The first graph of straight line from left to right represents the requirement of fixed assets. यानी पहली लाइन जो हमें x axis के ऊपर almost horizontal नज़र आती है, यहाँ तक हमारे fixed assets हैं जिसके लिए हमें financing generate करनी है. Above this graph is another straight line, a little moving upward from left to right, is the permanent requirement of working capital. और उसके ऊपर जो साइन वेव की तरह एक और ग्राफ हमें कभी बढ़ता और कभी कम होता हुआ नज़र आ रहा है, ये टेम्पररी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है. यानी हम इसको देख सकते हैं कि किसी वक्त में ये रिक्वायरमेंट होती है, ये ग्राफ ऊपर है, और किसी वक्त ये रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये ग्राफ नीचे आके हमारे परमानेंट रिक्वायरमेंट के बराबर हो जाता है. So in hedging approach, what we do is that
only for that requirement of working capital which is a temporary requirement we go for short term financing. और आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के नीचे वो एरो ये बता रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अरेंज कर रहे हैं. एंड ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी दैट हाउ मच इज द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग न सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है बल्कि करंट एसेट्स के या वर्किंग कैपिटल के उस पोर्शन के लिए भी अरेंज की गई है जो कि हमारा परमानेंट रिक्वायरमेंट है. सो बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ वी कैन सी दैट हाउ हेजिंग अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्चुअली वर्क्स. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म या परमानेंट है उतनी ही हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म है और टेम्परेरी है एग्जैक्टली उतनी ही हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है. जब ये रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है तो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी आउटस्टैंड नहीं कर रही होती. इससे फ़ायदा या नुकसान क्या है? ये फ़ायदा या नुकसान मैचिंग है, यानी हमारे पास उतनी ही फाइनेंसिंग होगी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. यानी जितने दिन के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की ज़रूरत है उतने दिन के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगी. सो हम अपनी इस डिस्कशन को कुछ यूँ कंक्लूड कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का एक ऐसा मिक्स इस अप्रोच के अंदर बनाया जाता है जिसके अंदर हम अपनी टेम्पररी और परमानेंट रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए इस फाइनेंसिंग को उसके साथ मैच करते हैं. इस मैचिंग के ज़रिए से हमारे पास एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पैदा होती है. यानी इस अप्रोच में हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की कॉस्ट का एक मिक्स पैदा होगा जिसको कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द वेटेड एवरेज, एंड वी कैन सी दैट हाउ मच विल बी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल अंडर द hedging approach of working capital management.